ट्रांस हिमालयाज के दिल में बसा हुआ है ज़ांस्कर, अ लैंड ऑफ अनटच्ड ब्यूटी एंड बाउंडलेस एडवेंचर। यहाँ हर कदम एक नई कहानी है और हर सांस में है आज़ादी का एहसास। वेलकम टू द ज़ांस्कर एक्सपीडिशन वेयर एवरी मोमेंट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर एंड्योरेंस एंड स्पिरिट। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे सम अमेजिंग लोकेशंस लाइक बुक्तल मोनेस्ट्री, सानी लेक, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर एंड मैनी मोर। What's really special is that for the first time we are doing an episodic series, so the entire journey will be covered in 3 episodes and we are really excited about it. The entire journey you will see us covering a distance of roughly 700 kilometers in 4 days, 350 kilometers on one side. So before we get going, let me introduce you to the crew. Joining us on our crew, firstly we have my good buddy Sanskar Mahant, a fruit farmer and currently preparing for government services. Next we've got Rahul Negi, a hotelier and a resident of Manali town. The guy literally has no enemies. Next up we've got Karan Chandok. He's the proud owner of Kebabs and Curries restaurant food chain. We are really fortunate to have him as our chef on this trip. Next up we have Siddharth Thakur, who is also an orchardist and he's a really funny guy if I tell you. Next up we have Sanjay Thakur, who runs a bike rental business by the name of Himalayan Tour and Travels. On the screen we have Arshid Bhanu, who is a doctor by profession. Then we have Karthik Thakur. The only thing that I'm gonna say about him is that no matter what would have happened, a cloud burst or even an apocalypse, this guy was hell-bent on going to Zanskar at all costs. On the screen we have Akhil Guleria, hailing all the way from Shahpur Kangra, who works in an MNC. At last, well, it's about time I introduce myself. My name is Karan Thakur and I'm a bit of an adventure seeker. My favorite pastimes include hiking and road trips. I'm a banker by profession and a part-time content creator. Cinematography is one thing that gives me an immense sense of peace and joy. हमारा सफर शुरू होता है होटल द्वारा इन से, where a meetup has been arranged. So Sanskar here, who is basically our organizer, is gonna make sure that we have packed all the essentials. While judging by the looks on these happy faces, you can pretty much guess how excited everyone is for this trip. The devastation that you're seeing on the screen is because of a massive cloudburst on Manali Atal Tunnel Road. It happened just a week before our trip. Thankfully, the BRO was quick to respond and the road was restored in no time. Welcome to Lahore, guys. अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप लाहौल वैली एंटर कर जाते हैं एंड दिस इज वेयर द रियल फन बिगिंस। ये जो पीक दिख रही है सामने ना, ये है घेपंग पीक। काफ़ी होली जगह है ये लाहौल वालों के लिए, और इसको ऐसा कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड की जो मैटरहॉर्न पीक है उससे काफ़ी रिजेंबल करती है ये। So the plan for day one was simple. We will go towards Shinkula Pass, which is the gateway to Zanskar, and after crossing Shinkula Pass, हम Mount Konbo Rangjon की तरफ बढ़ जाएंगे, which is precisely where we'll be camping for the night. ये वाला रास्ता गया बारालाचा और लेह मनाली हाईवे, और ये अभी हम जा रहे हैं शिंकुला ज़ांस्कर वैली। You can see the immense flow of Zanskar Sumdo River. As soon as we crossed Darcha checkpost, we knew we were in for an adventure because हम अपने फर्स्ट लैंडमार्क जो कि शिंकुला पास है उसके करीब आ चुके थे। गाइस, राइट में ये जो कैंची मोड़ दिख रहे हैं, ये है हमारे शिंकुला पास की ये जो मोड़ है।
This expedition was a long time coming. हम लोग काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे and finally we were all really happy that the trip was finally happening. So बात करते हैं शिंकुला पास के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट लैंडमार्क है ज़ांस्कर एक्सपीडिशन में. शिंकुला पास इज़ बेसिकली द गेटवे टू ज़ांस्कर एंड इसका अल्टीट्यूड है 5091 मीटर्स. एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट पॉइंट इन आवर एंटायर एक्सपीडिशन ऑफ ज़ांस्कर. और ये नासा से कांटेक्ट हो गया दोस्तों. एल्टीट्यूड आ गया हमारा 4489 और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब आ गया दोस्तों. नासा से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है हमें. And just like that, we reached Shinkula Pass. हम पहुंच चुके हैं शिंकुला पास. A 4.1 kilometer long tunnel has been proposed under the Shinkula Pass, जो कि मनाली से लेह के डिस्टेंस को लगभग 60 किलोमीटर से रिड्यूस कर देगा. The reason behind the construction of Shinkula Tunnel is to enhance the military mobility and logistic support for the deployed forces in the Ladakh sector. On completion, this tunnel will officially become the world's highest tunnel, surpassing even China's Mila Tunnel, which is situated at an altitude of 4750 meters. And there it is, guys, in all its glory, the mighty Shinkula Pass, standing tall at 5000 meters above sea level. तो क्या कहना चाहेंगे आप? गोनबो रंजन पहुंचने वाले हम. गॉनबो का तो पता नहीं, लेकिन मंजन में सुबह करके आया हूँ. मंजन करके आए हैं. बस भाई एक्साइटेड है, हम पहुंचने वाले हैं. ठीक है, तब मिलते हैं आपसे. ओके, ड्रोन शॉट में मिलते हैं. आइजा कांगड़ी मुन्नू बेचीजा. So now we had officially entered the Zanskar region, and the next landmark on our list was the mighty Gonbo Rangchon, a beautiful and standalone lofty peak situated in the Kargyak region of Zanskar. And there it is, folks, the iconic Mount Gonbo Rangchon. With its perfectly symmetrical shape and imposing presence, this mountain is a true marvel of nature. हम पहुंच चुके हैं गोनबो रंजन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे बैक साइड पे है, और आज हम यहाँ पे कैंपिंग करने जा रहे हैं. Gonbo पहुंचने के बाद the first thing we did was to find a suitable camping spot, and after that we decided to pitch our tents. And although all of us were tired, but still सभी excited थे for an awesome evening filled with music, bonfires and barbecue. क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं दिन है या रात है, क्यों मैं जानूं कि ना एक यही सवाल है.